Hello, good morning everybody. So welcome to a new session that is today is a very important class because in this class, that means in this video, we are going to discuss about the magnetic effects of electric current. That means it's a very huge chapter. It's a very lengthy chapter. In this chapter, first we will discuss about how a current carrying conductor produces an magnetic field all around it, and we will study about what is Biot-Savart's law and how Biot-Savart's law will be exploited in order to find out the magnetic field due to different charge distributions. And after all, we will discuss about Ampere's circuital law, and that is also a very important law, and we will discuss in detail about that law, and using that law also we will find out how to find out the magnetic field at different points due to symmetrically current carrying conductors. Okay, after that the force experienced by a moving charge, okay, by a magnetic field, how a current carrying conductor experiences a force when it is placed inside a magnetic field, and how a current carrying loop experiences a torque when it is placed in a magnetic field. And by using that concept, okay, how a galvanometer is constructed. We will discuss in threadbare about the construction of galvanometer and working principle, okay, of the galvanometer, and how galvanometer is converted into ammeter, and how galvanometer is converted into voltmeter. Okay, it's a very lengthy chapter, and it is very important for all the entrance examinations you are going to appear in future. Okay, so that is the reason for which you have to watch one by one continuously. Okay, most probably in one day gap or every day also I will upload a video related to this chapter. Please go on watching serially and sequentially, and prepare notes for yourself. Okay, I am also providing the notes of the related video in PDF file. Okay, so please collect them. So चलो शुरू करते हैं. So शुरू करने से पहले I am Lieutenant Duti Krishna Khandwal, lecturer in physics. Welcome to this video. Okay, so recall a little bit in electrostatics. We have studied two important laws, that is Coulomb's law, okay, and Gauss's law. In using Coulomb's law, we can able to find out the electric field due to point charge distribution. That means discrete charge distribution. Okay, so point charge or point charge distribution, which is called your discrete charge distribution. And by using Gauss's law, we have derived, that means we can find out, okay, the electric field that is produced by different symmetrically charge distributions. And similarly, in this chapter also we will study about two laws. One is Biot-Savart's law and second one is Ampere's circuital law, and we will exploit these two laws how to find out the magnetic field due to current carrying conductors. Okay, so शुरू करने से पहले देखो, एक्चुअली पहले सब सोचे थे कि एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, these are two different phenomena. Okay, electric field is produced by charged particles and magnetic field is produced by magnets, magnetic poles. Okay, so actually each and everyone, that means there is no idea about there is linkage between electricity and magnetism. इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कुछ रिलेशन होगा, इसके बारे में कोई सोचा ही नहीं था. लेकिन फर्स्ट टाइम इन 1820 Oersted, a great name in physics,
okay, performed a wonderful experiment, and from that we conclude that a current carrying conductor produce a magnetic field all around it. Okay, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पहले डिस्कशन करते हैं, इसके बाद हम बैट-सावर्ट्स लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो ओएरस्टेड लॉ क्या कहता है, ओएरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओएरस्टेड लॉ नहीं, ओएरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओके, सपोज here is a conductor, it's a conductor, suppose A, B, and it is connected to a battery, and suppose there is a key over here, plug key let it be, okay, and suppose current, this is my positive terminal, this is my negative terminal. If I will close this key, current will flow from A to B, okay, and I will place a magnetic needle over here. I will place a magnetic needle okay, this is my north pole of the magnetic needle, and this is my south pole of the magnetic needle, and let it be pivoted by a stand. Okay. Now you can see this is my magnetic needle. Okay, this is the south pole and this is my north pole of a magnetic needle. And suppose what happens, you see, this is the experiment performed by Oersted. Okay, when this plug key is made on, a current that flows from positive to the negative, that is from south to north, a current that flows in this direction. Okay, it is observed that the north pole gets deflected towards the west. The north pole gets deflected towards the west. That means the needle is turned like this. Needle is turned like this. Okay, needle is turned like this towards the west. Okay. So from this simple experiment, we can conclude that there is a magnetic field that is developed all around this current carrying conductor. क्योंकि एक magnetic needle can only be affected by a magnetic field. एक magnetic needle को एक magnetic field ही affect कर सकता है. Okay, so current carrying wire must have developed a magnetic field all around it, due to which this magnetic needle is deflected. Okay, so कौन सा डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट करेगा इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये सिंपल एक्सपेरिमेंट देखो, अगर मैं इसको फिर से ऑफ कर दूंगा, ये करंट फ्लो को अगर मैं जीरो कर दूंगा, तो देखो करंट फ्लो को अगर मैं स्विच को अगर ऑफ कर दूंगा तो करंट फ्लो बंद हो जाएगा. Immediately, within no time, the magnetic needle will regain its original position. ऐसे साउथ नॉर्थ होके फिर से टर्न करके रहेगा. ओके, फिर से अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा, you will find there is again a deflection in the magnetic needle. So from this simple experiment, it is concluded that a current carrying conductor produces magnetic field all around it. Okay, so ये जो ओएरस्टेड एक्सपेरिमेंट को रिलेट करके कौन सा डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करेगा, इसके ऊपर दो लॉ है, जिसको बोलते हैं, लॉ तो नहीं है, इसको रूल बोलते हैं, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन. ये लॉ नहीं है, ये रूल है. सो एक को बोलते हैं स्नो रूल. सो स्नो रूल, इसको अगर हम याद रखेंगे तो आराम से, so easily we can tell
in which direction the north pole of the magnetic needle will deflect. Okay, so देखो what this rule tells us. So if the direction of current flowing through the wire is from south to the north, and the wire is placed over the needle, then over the needle, then the north pole of the needle is deflected towards the west. So this is the rule using which we can find out the direction of deflection of the north pole of the magnetic needle. देखो ये rule हमको क्या कहता है? If the direction of the current flowing through the wire is from south to north. Suppose this is our south, this is our north. You see, this is our south, this is south, south, and this is our north, and this is our east, and this is our west. Sorry, this is east, and this is our east, and this is our west. Okay, ऐसे लिखा है. So देखो, so if the direction of current flowing through the wire is from south to north, देखो south ये है हमारा, ये north है. साउथ से शुरू होके अगर नॉर्थ की तरफ करंट हमारा फ्लो कर रहा है, ओके, साउथ टू नॉर्थ, and the wire is placed over the needle, the current carrying wire is placed over the needle, इसके ऊपर है, needle के ऊपर हमारा वायर अगर होगा, okay, the needle over the needle, then the north pole of the needle, will be deflected towards west. That means करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर करंट फ्लो करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ द नीडल, नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल विल बी टुवर्ड्स द वेस्ट. नीडल का नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा. तो अभी हम क्या करेंगे, सपोज करंट का डायरेक्शन को हम बदल देंगे. देखो अगर ये करंट का डायरेक्शन को मैं अगर चेंज कर दूंगा, सपोज ये मेरा प्लस होगा, ये मेरा माइनस होगा, दैट मींस current will flow in this direction, then the deflection will be towards east. इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा. ओके, इसका रिवर्स हो जाएगा. अगर ये मैग्नेटिक नीडल को मैं ऊपर ले जाऊंगा, कंडक्टर को अगर नीचे रखूंगा, तो द थिंग्स विल बी रिवर्स्ड. सो एक को अगर हम याद रखेंगे, तो अपने आप जो डिफरेंट सिचुएशन होगा, इसको हम आंसर कर पाएंगे. देखो इसीलिए इसको स्नो रूल बोला जाता है. देखो ये SNOW. सो स्नो रूल का मतलब है SNOW. ये स्नो रूल का हम कैसे यूज करेंगे, अगर हमारा करंट अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करेगा, करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर फ्लो करेगा, तो मैग्नेटिक नीडल, that means your current carrying conductor is over the needle, then the deflection of the north pole of the needle will be towards the west. ऐसे हम इसको यूज करेंगे. Again, so if current
in the current carrying wire flows from south to north and it is over the needle, then the north pole of the needle will be deflected towards the west. इसको बोलते हैं snow rule. Snow rule is used to find out the direction of deflection of the needle. Okay, clear to all of you? और भी एक रूल है जिसको मैं आपको बताता हूं. और भी एक रूल है. ये सेकेंड रूल को बोलते हैं एम्पियर्स रूल. ओके, सो एम्पियर्स रूल हमको क्या कहता है? सो एम्पियर्स रूल इज अगेन यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन. सो देखो इसका that means imagine a man, suppose a man is swimming okay, roughly सपोज ये एक आदमी है और ये इसका दोनों हाथ है. सपोज दिस मैन इज स्विमिंग. इमेजिन दिस मैन इज स्विमिंग. ओके, सो दिस इज द सिचुएशन. लेट इट बी roughly. Okay, चलो. That means a man is swimming in such a way that you see our same circuit. You see the current is again entering at its leg. You see the current is entering at its leg and leaving at its head. करंट का डायरेक्शन को देखो. अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा, ये मेरा प्लस ये माइनस है, करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, करंट आई विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन. दैट मींस एम्पियर्स लॉ स्टेट्स दैट, एम्पियर्स लॉ टेल्स अस दैट व्हेन करंट इज entering at the leg and leaves at the head and the face of the person is towards the needle, that means the person is looking towards the needle, then the magnetic needle will be deflected towards the left hand, of the person. So ये हमारा लॉ होगा, ये रूल होगा. देखो, imagine a person to swim along the wire. Okay, along the wire in the direction of current. Okay, with his face towards the needle, okay, so that the current enters at the leg and leaves at his head, then the north pole of the magnetic needle will be deflected
towards the left hand. Okay, towards the left hand. Very simple rule. Actually स्नो रूल जो कहता है, ये एम्पियर्स रूल भी वही कहता है. Actually these two rules are used to find out the direction of deflection of the magnetic needle when it is placed near a current carrying conductor. Okay, so तरीका अलग है लेकिन एम एक है. So to find out the direction. So देखो ये करंट देखो जो फ्लो कर रहा है ए से बी की तरफ जो फ्लो कर रहा है, that means as if the current is entering at its leg and leaving at its head, then the person is looking towards the needle. Okay, that means its face is towards the needle. Then the direction of the deflection of the north pole of the needle will be towards his left hand. Towards his left hand. Okay. So current का direction अगर बदल जाएगा, that means if current will enter at his head and leave the leg, definitely the deflection will be towards the right hand. लेकिन हम ऐसे याद रखेंगे. Clear all of you? Thank you all. So this is all about your two rules to find out the direction of deflection of the magnetic needle. तो ये हो गया हमारा दो रूल. तो पहले हमको देखो मालूम नहीं था कि इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म इसके कुछ रिलेशन होगा करके, लेकिन ये ओएरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट पूरा सिनारियो को बदल के रख दिया. तो पहले हमको we didn't know that there is a wonderful relationship between electric current and magnetic field. ओके, सो ऐसे भी देखो और भी एक इंस्टेंस आपको मैं दे रहा हूं. अगर ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट सपोज फ्लो कर रहा है. फाइनाइट करंट इज फ्लोइंग इन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर. दिस इज द पार्ट ऑफ द कंडक्टर आई हैव शोन यू. दिस इज द पार्ट ऑफ द कंडक्टर. ओके, प्लेस ए चार्ज ओवर हियर. इसके पास एक चार्ज्ड पार्टिकल को रख दो. सपोज इसका चार्ज Q है. सपोज इसका चार्ज Q है. यू विल फाइंड देयर इज नो फोर्स ऑन दिस चार्ज. ये चार्ज्ड पार्टिकल कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. दैट मीन्स देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड ऑल अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर. इट सीम्स ओके. लेकिन अगर ये चार्ज्ड पार्टिकल को अगर मैं एक वेलोसिटी दे दूंगा, चार्ज्ड पार्टिकल को अगर मैं वेलोसिटी दे दूंगा, तो इट इज द instantly observed that this charged particle is deflected. This charged particle is deflected. Okay? Clear to all of you? देखो पहले जब रेस्ट में था तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन इसको जब एक वेलोसिटी दे दिया गया, इसके ऊपर फोर्स लगा. तो करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, बिकॉज इट इज ए न्यूट्रल. ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज ए न्यूट्रल कंडक्टर. इट इज नॉट चार्ज्ड. Just charged particles are flowing. When a potential difference is developed across the terminals of a conductor, current starts flowing in the conductor, but it is a neutral conductor because there is no loss or no gain of charge. Only charge is flowing inside the conductor due to potential difference. That means this neutral conductor cannot produce an electric field all around it. So अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो ये चार्ज्ड पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा. लेकिन जब एक चार्ज्ड पार्टिकल को मोशन दे दिया गया, when this charged particle starts moving, इसके ऊपर एक फोर्स लगा. So चार्ज पार्टिकल के ऊपर अगर फोर्स लगा है, so definitely there is a source of force. कोई तो सोर्स होगा जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है. Okay, and that is nothing but the magnetic field.
दैट इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड। आगे इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये चार्ज पार्टिकल Q के ऊपर जो फोर्स लगेगा, that force is nothing but your magnetic force, and that is equal to Q times V cross B। so इसके ऊपर हम आगे डिस्कशन करेंगे। ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। हम ओएरस्टेड की जो एक्सपेरिमेंट को अभी डिस्कशन किए हैं, प्रूव करके हम देखे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को अगर डिफ्लेक्ट कर रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो मैग्नेटिक निडल को कोई मैग्नेटिक फील्ड ही डिफ्लेक्ट कर सकता है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक निडल को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है। मैग्नेटिक निडल को केवल मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर की चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पांसिबल फॉर द फोर्स ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल। ओके, व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल इज एट रेस्ट, इट एक्सपीरियंसेस नो फोर्स। अगर चारों तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता, तो चार्ज्ड पार्टिकल रेस्ट में अगर होता तो भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगता, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स is independent of the velocity of the charged particle, that is equal to QE। Fe is equal to QE। तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर की चारों तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज अगर रेस्ट में होता तब भी फोर्स लगता, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता, लेकिन इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जब ये मोशन करता है तब जाके इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, एंड दैट फोर्स is not due to the electric field, because there is no electric field all around it, because current carrying conductor is a neutral conductor, so ये तो electric field produce नहीं कर सकता। so current carrying conductor definitely produces magnetic field all around it, and that is the responsible, and that magnetic field is responsible for this magnetic force। clear to all of you? so दिस इज ए शॉर्ट डिस्कशन जो ओएरस्टेड का एक्सपेरिमेंट के बाद, ओएरस्टेड की एक्सपेरिमेंट के बाद, दैट मींस आफ्टर 1820, बायट्स, एम्पियर और बहुत सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर बहुत सारा डेवलपमेंट लेके आए। ये जो डेवलपमेंट को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। बायट्स लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे, और बायट्स लॉ को रिलेट करके स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर लूप के बारे में, चारों तरफ कैसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, इसके ऊपर हम बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।